If you're a student, a college going girl, or a working lady and you are looking for a 5 to 10 minute quick makeup tutorial, this video is meant for you because I'm gonna share my quick 10-minute makeup tutorial that I do almost every day for my college. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In case you're new here, hi, my name is Anushka and this is my YouTube channel. इतने सारे vlogs हो गए मेरे channel पे तो I thought why not to do like a sit down video wherein I talk to you guys, I share my makeup tips and tricks. Let's get started. Okay, I have this claw clip. This is like a cherry claw clip that I've got from the UK and बहुत cute है ये तो मैं अपने बाल इससे बांधूंगी अभी. My hair is literally so greasy but I really wanted to shoot this tutorial for you guys, so yeah, here we are. Okay, so the very most important thing before we begin with our 10-minute makeup tutorial, और कोई भी मेकअप कर लो आप, ग्लैम मेकअप करो या 10-minute क्विक मेकअप करो, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज बनती है मेकअप स्टार्ट होने से पहले वो है क्लेंस करना अपने फेस को. और क्लेंजिंग बहुत मायने रखता है, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एंड अगर आप क्लेंस ना करो तो ऐसे मतलब गंदे से पोर्स आपके चेहरे पे दिखता है, which is not a good sign. And if you ask me which cleanser do I use the CeraVe cleanser. By the way, this is a non-sponsored video. I've been loving the CeraVe's foaming cleanser. I used to use Cetaphil's foaming cleanser as well, but मैं अभी जो currently use कर रही हूँ वो है CeraVe. So I've washed my face properly with the CeraVe's foaming cleanser and now we'll move on to the moisturizer और sunscreen. दोनों बहुत ज़्यादा important है. It creates a base for your makeup which looks really nice. Like base create करने से आपका मेकअप जो है बहुत अच्छे से सेट होता है. So let's move on to our moisturizer and then our sunscreen. Okay, so for the moisturizer I use this Cetaphil's moisturizing lotion. ये बहुत टाइम से मैं यूज करे जा रही हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है यार, इतनी बड़ी बॉटल है. तो आई हैव टू स्विच टू अ न्यू मॉइस्चराइजिंग लोशन, बट ये खत्म हो तो मैं स्विच करूँ. दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर, वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइजर. एंड यू नो मैं आजकल अपने स्किन पे कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, लाइक लिटरली कुछ भी नहीं. आई एम ओनली स्टिकिंग टू अ गुड क्लेंजर, अ मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन. निकल जा भाई. ओके, सो इतने क्वांटिटी में लेना है and we have to apply it generously on our face. Now once you're done with the moisturizer, you apply a sunscreen. I mean, मैं बहुत टाइम से यही एक sunscreen use कर रही हूँ. This is the Dot & Key's watermelon cooling sunscreen and I feel like ये मैं सालों से use करे जा रही हूँ. You have to make sure that you apply sunscreen really generously because आप मेकअप बाहर जाने के लिए करते हो, घर पे कोई मेकअप करके बैठता नहीं. आप बाहर जाने के लिए मेकअप करते हो तो बाहर सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सनस्क्रीन इज डन, मॉइस्चराइजर इज डन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेकअप. It's a very easy 10-minute makeup tutorial that I follow as a student for my college. I'll be using this mirror. This is a cutesy mirror. ये मैं use करने वाली हूँ for my makeup because मैं देख नहीं पा रही हूँ, मेरा कैमरा है, so I'm not able to see my own face. Very first product is our concealer. I have a few pigmentation spots जो अभी तक गए नहीं है अभी भी. उसको छुपाने के लिए we apply थोड़ा सा कंसीलर. एंड फॉर द डार्क सर्कल्स, मेरे तो डार्क सर्कल्स अलग ही दिखते हैं भाई, तो डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए आई हैव अ मिक्स ऑफ हाई एंड लग्जरी एंड ड्रग स्टोर मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैं ये वीडियो में बताने वाली हूँ. हाई एंड मेकअप प्रोडक्ट्स अभी मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो अब मैं क्या करूँ ना, मैं बताना ही पड़ेगा मुझे. आई हैव दिस लॉरियल पैरिस इनफैलिबल कंसीलर दैट आई विल बी यूजिंग. बहुत ही I mean, it's the best concealer that L'Oreal has ever made. बहुत ही बाप कंसीलर है ये. मैं डायरेक्टली कंसील नहीं करती अपने अंडर आईज को. I always make sure to have इधर अपना कंसीलर. I always do that because अगर डायरेक्टली आप लगाओ ना तो पैची लगता है बहुत. So I make sure to like put it on my hands and then apply it with the sponge. So if you apply it with your hands, हैंड्स के जो फाइन लाइंस होता है उससे एकदम पैची लुक आता है. फिर इफ यू अप्लाई इट विद ब्रश से भी वो ब्रिसल्स की वजह से पैची लुक आता है. सो आई ऑलवेज prefer a sponge over anything. We take this sponge and we dab बहुत ही थोड़ा सा and we go on with our pigmentation spots. बहुत ही कम लाइट वेट ऐसा मेकअप करने वाले आज हम. अगर आप लोग को स्पॉट्स नहीं है तो भी अगर आप लोग को चाहिए थोड़ा shiny glow on your face, you can just dab it all. I have a few pigmentation spots that are yet to be gone. Make sure you also
have this portion covered, I would be taking some concealer. बहुत ही थोड़ा concealer लूंगी मैं, इतना. I would be putting 3 marks over इधर 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 इधर. Let the concealer sit for a minimum of 30 seconds before you start blending. अब हम sponge लेंगे. अब इसको अच्छे से हम डैब करेंगे. Now it's a loose powder time. Can you see how I've set this loose powder under my concealer? मैं थोड़ा सा लिया, dab किया, थोड़ा सा left over निकाला, and then I dabbed it all over my concealer. The very glowy, natural finish to my under eyes. Okay, now what you're supposed to do is just dab it so the powder remains on the under eyes and जो left over है वो निकल जाए. This is how it is looking. I really love how I have baked my under eyes. This process is also known as baking because you're literally pressing the powder on your under eyes and removing the excess. Okay, this is how it is looking. Now let's move on to our next very important step, which is the blush. बहुत सारे लोगों को blush पसंद है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, बहुत सारे लोगों को blush blindness होता है, which is basically you apply a lot of blush and still you look good. So I am going to apply a liquid blush first and then set it up with a powder blush. The important step है blush use करने से पहले you have to make sure that you're using the liquid blush first to set your blush area, and then you're setting it with the powder blush. So it is very important. If you do not have both of the blushes, you can use like a lipstick or something, whichever shade you like, and then just dab it. बचपन में यही करती थी. So I'm just giving you like a tip or something. Now I have this liquid blush from Huda Beauty. This is the Fox Filler liquid blush. Now I am using this liquid blush first, and मैं कैसे use करती हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. ये हमारा cheekbone है. cheekbone के थोड़ा सा नीचे we can apply the blush इधर. This is in the shade Cotton Candy. As you can see, the color and the smell is amazing. तो अब हम इधर एक डॉट लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे. I'm gonna do the same, and then we're gonna take the brush and blend it all over. It is very important for you to stick to this part, मतलब forehead के नीचे वाला part, उधर भी थोड़ा सा blend करना है because थोड़ा सा shiny glowy look आने के लिए you could blend it. Or if you want to skip the blush totally, you could also do that and move on to the highlighter. Now I have this powder blush that I'm gonna be using. Yeah, this is from Rare Beauty. This is a soft pinch blush, and ये ना टूट गया था मेरे से. This is how it is looking right now. I'm again going to take this blush, थोड़ा सा dab करूँगी. Excess निकालना बहुत ज़रूरी है. So if you dab it, you have to remove the excess because फिर वो बहुत patchy लगता है. Okay, now this is the blush. It's in the shade Happy. Going to do a very thin layer on my liquid blush. इसको ऐसे नाक पे लगाएंगे. बहुत ज़्यादा ऐसा घसीट के blend नहीं करना है. थोड़ा सा ऐसा normally blend करना है. So your next part calls out for a good highlighter. So if your blush doesn't have a highlighter inbuilt, almost all the blushes that I've seen, except for the cakey blushes or the cheek tints and all of that, have a highlighter inbuilt. So ये जो मेरा Huda Beauty का blush है, इसमें भी थोड़े amount में highlighter है. Blush को लगा के highlighter skip करना चाहते हैं, it totally depends upon you. But I don't like skipping my highlighter because it gives a very glowy, natural, dewy finish to your face. So मुझे ऐसा लगता है highlighter is also a very important step. It totally depends upon you. गिरने वाला था. So I have this highlighter, of course. बहुत सारे products luxury high end के हो चुके हैं, but I have this highlighter, the Charlotte Tilbury's Beauty Light Wand highlighter. I've been seeing this all over the internet and मुझे Christmas gift में ये मिल गया. Happiest girl, the luckiest girl in the world, touch wood. तो ये थोड़ा सा है इसके ऊपर wand में. So I just want to take a bit of it, not too much. और हम इसको sponge से blend करेंगे. मैं हमेशा ही हाइलाइटर या कोई भी मेकअप प्रोडक्ट को हाथ में लेके डैब करके फिर लगाती हूँ, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली लगाओगे तो बहुत ज्यादा केकी और पैची दिखता है. गो ऑन डैबिंग ऑन योर चीक बोन. बहुत थोड़ा लेंगे, डैब डैब करेंगे. फॉर द नेक्स्ट पार्ट वी हैव आवर आईज. तो हम मस्कारा लगाएंगे.
Now for the mascara, I have this LA Girls Volumizing Jet Setter mascara. This mascara is my favorite mascara. मतलब बहुत ही clean lashes देता है ये mascara. तो उसके पहले हम lashes को अपने curl करेंगे. For that I have this curler. ये कौन से brand का है? I don't know कौन से brand का है. ये Nykaa से खरीदा था. So you'll get it on Nykaa, anywhere on Nykaa. जिसको बहुत basic चाहिए वो ना करे ये सब. You have to sit for like 20 seconds. Now once the curling part is done, you're gonna take this mascara and lightly, पूरा मतलब जो भी residue है निकाल देना. Lightly you're just gonna do this because you don't want to go heavy on this mascara. Lightly हम लगाएंगे. अगर आप लोग के पास मस्कारा नहीं है तो प्लीज 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 बाय इट बिकॉज मस्कारा से बहुत फर्क पड़ता है मेकअप पे, बहुत ज्यादा. नाउ आई बीन लविंग दिस ब्यूटी ब्रांड लेटली. इट्स बाय लव चाइल्ड मसाबा. माय मॉम, मी, एवरीवन इज ऑब्सेस्ड विद दिस ब्रांड. लव चाइल्ड बाय मसाबा की काजल पेंसिल ट्राई की. इट्स द बेस्ट काजल पेंसिल. आई लव इट. This is how it looks. I love kajal because मेरा face अलग ही glow करता है काजल में. But if you do not have a habit of applying kajal, you could just try it or skip the step. Now the last bit after the kajal. So now for all the lipstick girlies, I have something for you, and for all the lip gloss girlies, I have something for you. Okay, now I have the Charlotte Tilbury's Pillow Talk lipstick. बहुत viral हो गई थी. I am like a nude girly to the core. So if you guys like red lips, or if you guys prefer using red lipsticks or maroon or dark shades more, you could stick to your dark lipsticks. But I am a nude girly, so I have this lipstick. This is a Pillow Talks lipstick and I'm gonna try it for the very first time. मैंने कभी try नहीं किया. This lipstick is actually so hydrating, yaar. I love this lipstick so much. It literally suits my skin tone so well. Oh, I'm not gonna do this alone. I am going to stick to a lip gloss. Well, of course, it is a high-end makeup product again. I'm so sorry. Okay, now this is the Dior's lip oil that I've been using currently. I've been obsessing. It gives like a nourishing effect to your lips. In case you do not have a lip oil, you could also use a lip balm or something, or you could keep your lips intact with a lipstick. Okay, now this is how my lips are looking after having applied the Charlotte Tilbury's Pillow Talk lipstick and the Dior lip oil on top. This is how my lip combo is. I obviously tried the Pillow Talk lipstick for the first time, but I stick to the nude lipsticks more often. I do not go for the reds and the maroons. I often stick to the nudes. And nude lipstick के ऊपर I apply a lip balm or a lip oil. Okay, now the next step that I'm going to show you is an optional step. So the makeup tutorial ends on the lipstick, but I do it on a regular basis. It's the eyebrows. So filling up your eyebrows is one of the most important steps, and I have to do it because मेरे eyebrows को salon वाली ने पूरे खराब कर दिए थे. I just have to shape it with spoolie. I have two eyebrow thingies. This ELF Cosmetics का वाओ ब्राउ जेल. ये बहुत थोड़ा यूज करना है बिकॉज बहुत ज्यादा आता है इसमें. आई यूज इट व्हेन आई गो आउट मोर ऑफन. Now this is my 10-minute entire makeup routine that I do for my college, or you could do it for your college, or if you're a student or a working lady. I love how this makeup has turned out. I love every detailing that I have shown in the video, and I hope you stick to these detailings because they are the very most important things while you do like a full face of makeup, or while you do like a 10-minute routine that I showed you. My hair is really very greasy, but that sums up to our video, and I love my makeup routine. And if you follow the same makeup routine, do not forget to tag me on your stories. Yeah, I love this so much, and this is the exact same makeup that I follow for my college. That sums up to our video as well. Thank you so much for watching, and if you've come this far watching the video, I love you. See you in my next video, and comment below some YouTube video ideas because I do not know मतलब मैं क्या shoot करूँ regular basis पे. So you guys let me know. I'll see you in my next video.